हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। रत्ना त्राया में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट 9 का पार्ट 2। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, एंड अच्छा आप लोग एक बात बताइए कि क्या वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है या फिर क्या? ना आप लोग लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना क्वेश्चन का आंसर करते हो, ऐसा क्यों? जो भी है बता सकते हैं कमेंट में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। और अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट होता है, फॉर एग्जांपल मैथ्स हो गया या कुछ भी, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं सेंड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, एंड आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग directives to the state is not mentioned in part 4 of the Indian Constitution. Okay, part 4 of the Indian Constitution में कौन सा मेंशन नहीं है ये पूछा गया। ओके, so first one is to promote international peace and security and maintain just and honorable relation between nation. क्या ये पार्ट है? Yes, it's a part of the पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ DPSP। ओके, और वो कौन से आर्टिकल 51 में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्लेम ऑफ द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब शैल बी taken into consideration. No, it's not a part of the part 4 of the Indian Constitution which is DPSP. It's a part of the part 16 which is under 335 of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्टिकल। ओके, सो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स आर इंजूरियस टू हेल्थ। इट्स कम्स अंडर आर्टिकल 47। ओके, सो ये भी हो जाएगा। सो ऑल स्टेटमेंट नहीं हो जाएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B, which is correct because there is asking about the not mentioned in the part 4। और पार्ट 4 में कितना से कितना आर्टिकल तक आता है? सो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आर्टिकल 36 to 51 है। ओके, तो ये 51 में हो गया, ये 47 में। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर B। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज not essential for the classifying a system of फेडरल सिस्टम के लिए क्या कौन सा क्लासीफाई नहीं करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जी हाँ, ये फेडरल सिस्टम का है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये भी फेडरल है। रिटायरमेंट जज, एज ऑफ द जजमेंट, नो, ये नहीं हो जाएगा। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट वन। जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की बात करते हैं तो वो कैसे इंडिपेंडेंट? फॉर एग्जाम्पल इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दिस आर रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर स्टेट। Next one is protect the distribution of powers, etc. Okay, so answer is option number C. Let's come to the next one, which is which of the following provision of the Constitution of India became effective from 26th of November 1949? ओके, उस टाइम ये इफेक्टिव में आया है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। ओके, सो फर्स्ट वन इज प्रोविजनल पार्लियामेंट, इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट वन। ये प्रोविजनल पार्लियामेंट करेक्ट हो जाएगा। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, नो। प्रोहिबिशन ऑफ ड्यूअल सिटीजन, यस। ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324, ये भी हो जाएगा। एंड ओथ और अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी हो जाएगा। सो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि एज वी नो फंडामेंटल ड्यूटी हमारा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 में इसको ऐड किया गया है। किसमें? पार्ट 4A में, जो कि आर्टिकल आ जाता है 51A के अंदर। ओके, जिसमें कि ओरिजिनली 10th फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे हमारे, बट एडिशनली एक और वन ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1, 3, 4, 5 विच इज़ करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर C is the correct one. Okay, which is 1, 3, 4 and 5 only are correct. Okay, next question is with reference to sewage management in
इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, सीवेज मैनेजमेंट इन इंडिया, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो यहाँ पे कौन सा एजेंसी रिलेट करता है उससे वो पूछा गया. ओके, रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन दिस इन्वेंट्री. ओके, और एजेंसी का नाम पूछा गया. सो फर्स्ट वन इसका स्टेटमेंट देखते हैं. द नेशनल इन्वेंट्री ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट विच इज NISTP is a nationwide database providing information on sewage generation, treatment capacity and optional status of sewage treatment plants across state and union territories. So which agency is responsible for the maintaining this inventory? So agency is the option number C, which is Central Pollution Control Board. Okay, Central Pollution Control Board, CPCB. Okay, so answer is option number C is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following pairs regarding the DPSP. और इसके एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में पूछा गया, उसे एक्ट्स एंड DPSC के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में. सो फर्स्ट वन इज इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, आर्टिकल 39. यस, इट्स अ करेक्ट. और 39D में ये मेनली बात किया गया है. सो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट. और इसमें एक और आता है जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की भी बात करता है, जो कि आर्टिकल 39 में इम्प्लीमेंट होता है. ओके, सो नेक्स्ट वन हो जाएगा मिनिमम वेज. नो, मिनिमम वेज नहीं हो जाएगा बिकॉज ये आर्टिकल 48 में नहीं, आर्टिकल 43 में आता है. ओके, so second statement is incorrect. And if you are talking about the minimum wage, there is Minimum Wage Act 1948, Payment of Wage Act 1936, Child Labor Prohibition and Regulation Act 1987, 86 etc. इसके अंदर आता है. So second statement is incorrect. The next statement, which is third, which is the Criminal Procedure Code, comes under the Article 50. Is it true? Yes, it's a correct statement. In this Criminal Procedure Code, Article 50 and Article 50 में क्या है? So which directs the state to separate the judiciary from the executive in the public service of the state. Okay, so statement third is also correctly matched. Okay, so answer for this question is option number B, which is two statements are correctly, only two statement is correctly matched. Okay, next question is which of the following is not enshrined in the fundamental duty of the Indian Constitution. Okay, fundamental duty में कौन सा नहीं है? So फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में अभी क्या बताया था कि वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा. ओरिजिनली कितना आर्टिकल्स उसमें थे? सो उसमें 10 आर्टिकल से बाद में एक और ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किसके रिकमेंडेशन से आया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से. ओके, सो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. नेक्स्ट है, इसमें स्टेटमेंट देखते हैं. टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़, इज इट ट्रू? यस, इट्स कम्स अंडर द आर्टिकल 51A सब क्लॉज J में आता है. ओके, नेक्स्ट हो जाएगा टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड, इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट इन द फंडामेंटल ड्यूटी. एंड टू प्रमोट हार्मोनी अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यस, इट्स इन द 51A सब clause E. And to have compassion of the living creature, yes, it's also in the part of the fundamental duties, which is comes under the 51G में. Okay, so answer is option number B is the correct. Next question is consider the following statements and there is asking about the correct one. So first statement is oligarchy is a system of governance in which power and authority are held by the small groups of individual or families. Is it true? Yes, it's a correct statement related to oligarchy. Next one is totalitarianism refer to a state of society where there is no centralized government or authority. Is it true? No, it's not correct because it's not related to the totality, it's related to the anarchy.
Okay, anarchy. So this statement is incorrect. And if you're talking about the totalitarianism, it's form a government characterized by the centralized and absolute control over all aspect of public and private life. Okay, so answer for this question is option number A, only one statement is correct. Okay, next question is which of the following statement regarding the Constituent Assembly of India, और यहाँ पे not correct पूछा है. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ओके, सो फर्स्ट वन इज महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. करेक्ट, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर नहीं थे. नेक्स्ट वन इज सेपरेट इलेक्टोरेट प्रैक्टिस वॉज नॉट फॉलोड इन इट्स इलेक्शन. इज इट ट्रू? नो, इसमें फॉलो किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट प्रैक्टिस का. ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज इफ फंक्शनड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट of free India. Yes, it's a correct one. Next one is elephant was adopted as the symbol or seed of the Constitution Assembly. Correct, it's also correct. So answer for this question is option number B, which is not correct. Okay, next question is in India every citizen has constitutional right. Correct. So अब यहाँ पे पूछा कौन कौन सा है. सो करेक्ट वन इज, यहाँ पे करेक्ट पूछा है. सो फर्स्ट वन इज टू होल्ड पब्लिक मीटिंग. करेक्ट. डेमोन्स्ट्रेशन. करेक्ट. स्ट्राइक का पावर नहीं है. नेक्स्ट वन इज होल्ड प्रोसेसिंग. ये भी करेक्ट है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर. और ये स्ट्राइक की अगर हम बात करते हैं, स्ट्राइक का नहीं है, बट यहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं. ओके, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि अंडर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर आता है. ओके, एंड फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा आर्टिकल कितने से कितने हो जाएगा. सो 12 to 35 के बीच में हो जाएगा. ओके, ऑल आर फंडामेंटल राइट्स. सो ये हो जाएगा. एंड इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, विच इज स्टेटमेंट 1, 2 and 4 ओनली आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements. First statement is no Supreme Court of the judge. First question is no Supreme Court judge has been impeached since independence. Is it true? Yes. अभी तक में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज कोई इम्पीच नहीं किया गया है. ओके, सो ये स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीड्यूर टू रेगुलेट अ डिटेल्ड एंड कम्बर्सन प्रोसीड्यूर टू इम्पीच provide protection of the Supreme Court judge. Is it true? No, it's not correct because ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. ये किसके अंदर आता है? सो इट्स कम्स अंडर द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर. ओके, एंड अगर हम इसमें बात करते हैं कि इम्पीचमेंट कैसे होता है किसी भी जज का, सो लेट मी टेल यू हाउ इट्स बी डन. सो फॉर एग्जाम्पल किसी जज को इम्पीच करना है. ओके, मतलब उसके पोजीशन से हटाना है. सो देयर इज सम रेगुलेशंस एंड रूल्स रिलेटेड टू दिस वन. फॉर एग्जांपल रिमूवल मोशन साइन करना है. अगर रिमूवल मोशन साइन करना है तो 100 मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड 50 मेंबर ऑफ द राज्यसभा, जब ये साइन करके मोशन पास किया जाएगा, देन ये स्पीकर एंड चेयरमैन के पास जाएगा. देन स्पीकर और चेयरमैन जब ये डिसाइड करेंगे कि स्पीकर और चेयरमैन इसको या तो रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकते. फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, तो ये फिर 3 मेंबर का कमिटी फॉर्म करेंगे टू इन्वेस्टिगेट. ओके, एंड अगर इन्वेस्टिगेशन में और वो 3 मेंबर कौन कौन से होंगे, सो चीफ जस्टिस और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पहला, दूसरे हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड थर्ड हो जाएगा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट. ओके, 3 मेंबर. और अगर ये तीनों मेंबर की कमेटी जब फॉर्म किया गया, देन अगर वो गिल्टी पाए गए, ओके, गिल्टी पाए गए इन मिसबिहेव और सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी, तो इसमें क्या किया जाएगा, देन उसका नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि कंसिडरेशन ऑफ मोशन. ओके, पास किया जाएगा. फिर जब मोशन पास हो जाएगा तो वो फिर जाएगा कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको फिर साइन करेंगे. देन ये इम्पीचमेंट हो जाएगा जज का. ओके,
So this is the all process related to the impeachment of the judge. So आंसर इसका क्या हो जाएगा? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट था एंड सेकेंड वन इज इनकरेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी विच इज correct for this question. Okay, next question is in the constitution of India to preserve the rich heritage site, rich heritage of the country, composite culture is included in the it's in the fundamental duties. और fundamental duties में कौन सा? fundamental duties का 51A सब क्लॉज F में ये मेंशन है. ओके एंड अगर हम अभी मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लाया गया है 1976 में, और ये अंडर 51A में ये सारे इसके आर्टिकल्स हैं 51A एंड इसमें कितने हैं? सो टोटल 11 आर्टिकल्स हैं जो कि ओरिजिनली 10 थे, बाद में एक ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में. और इसमें क्या ऐड किया गया था? सो फ्री एंड कंपलसरी गार्जियन और पेरेंट्स के लिए ये कंपलसरी किया गया था कि एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए. ओके एंड 86th अमेंडमेंट से एक और ऐड हुआ था जो कि DPSP में हुआ था, जिसमें कि अंडर आर्टिकल 45 में ये बोला गया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द लेस दैन 6 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स. ओके so answer for this question is option number C, which is fundamental duty. Okay, let's come to the next question, which is consider the following sectors, which is which of the above are eligible sector under the Indian sovereign green bond framework जो कि 2022 का है. so it's related to the first one is solar power, correct. Water waste treatment, correct. Affordable housing, no. Sustainable transportation, yes. So answer for this question is 1, 3, 4, which is option number B is the correct one. ओके एंड इसमें अगर हम बात करते हैं इंडिया सॉवरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क 2022 की, सो इट्स आउटलाइन अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट फॉर द यूज़ ऑफ प्रोसेस फ्रॉम सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स. और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? सो रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलार, विंड एंड बायोमास तीनों आ जाएगा. देन हो जाएगा सस्टेनेबल वाटर एंड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट. देन अनदर वन इज क्लीन ट्रांसपोर्टेशन लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट. एंड अनदर वन इज पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. नेक्स्ट one is energy efficiency, then climate change adaptation. All are included in this one. Okay, so answer for this question is option number B is correct, which is 1, 3 and 4 only statement is correct related to the India's sovereign green bond framework. Okay, so next question is which of the following aims to create a essential government's law and not for the men's. Okay, so is this a parliament? No. 7th schedule? No. It's a fundamental duties. Okay, so answer for this question is option number C is the correct one. Okay, let's come to the next question, which is which of the following statement are correct with respect to preamble. Okay, preamble, it's a fundamental right, not fundamental duty. Okay, so option C is the correct one. Next one is consider the following statement with statement is correct with respect to preamble. Okay, preamble के regarding कौन सा statement correct है वो पूछा गया है. Okay, so first one is the word integrity has been added to the preamble by the 42nd Constitution Amendment Act. Is it true? No, it's not correct because it's added by the 42nd Constitution Amendment Act 1976. और इसमें 3 वर्ड को ऐड किया गया था. कौन सा? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, नॉट 44 से. ओके, सो एंड अभी तक में प्रियम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है, ओनली वंस. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज
In the Bedubari Union case, the Supreme Court held that preamble is a key to the mind of the makers of the Constitution. Yes, it's a correct one. Next one is the preamble can be source of power for the legislature. No, it's not correct because yes, preamble source नहीं है मतलब पावर का सोर्स नहीं है. इट्स अ रिप्रेजेंटेशन कि हमारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक जिस्ट है. ओके, नॉट द सोर्स. So answer for this question is, because there is asking for the correct one, so option number A, only statement 2 is correct. Okay, next question is, which of the following is mode of Indian citizenship under the Citizenship Act 1955. Okay, so first one is by birth, descent, registration, declaration, all are correct. and इसमें एक और सॉरी नॉट डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन के द्वारा नहीं होता है, सो इट्स इनकरेक्ट. एंड टोटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसमें 5 वे है टू एक्वायरिंग द इंडियन सिटीजनशिप. पहला क्या हो जाएगा, बर्थ, जिसमें जो कि सेक्शन 3 में मेंशन है, डिसेंट इन सेक्शन 4, रजिस्ट्रेशन इन सेक्शन 5, and 2 more are, which is naturalization, which comes under section 6, and another 5th one is incorporation of territory under section 7. okay, और incorporation of territory में examples की अगर हम बात करते हैं, which is गोवा in 1961, और ये किससे लिया गया था, सो पोर्टुगीज से. एंड अनदर हम बात करते हैं विच इज़ सिक्किम, जो कि इंडिया का पार्ट कब बना था, 1975 में. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, बिकॉज देयर इज आस्किंग फॉर द करेक्ट वन, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज 1, 2, 3 आर ओनली करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज with reference to Mucuna bacteriata. ओके, मुकुना बैक्टीरियाटा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो फर्स्ट वन इज, it is a leguminous cover crop introduced in rubber plantation for its nitrogen fixation and weed suppressing properties. Yes, it's a correct one. Next one is, it is a native to Western Ghat and plays an important role in the natural forest system there, ecosystem there. No, it's not correct because ये naturally Western Ghat में नहीं पाया जाता, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था. ओके, इंट्रोड्यूस, और ये इंडिया के कहाँ पे पाया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, और वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार एंड चाइना तरफ भी पाया जाता है. ओके, सो दिस वन इज़ नॉट करेक्ट, और ये नेटिव नहीं था, और नेचुरल फॉरेस्ट का इकोसिस्टम भी नहीं था. ओके, जबकि वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया वेस्टर्न घाट में, तो वो एक इन्वेसिव स्पेसीज हो गया, उससे प्रॉब्लम होने लगी वहाँ के अदर्स इकोसिस्टम को. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, next question is, to secure the right to work under the Indian Constitution is given in right to freedom under Article 19. It's true? No, it's not correct, because right under Article 19 क्लॉज जी में ये मेंशन है कि आप राइट टू चूज़ एनी ऑक्यूपेशन, चूज़ कर सकते हैं एनी ऑक्यूपेशन को, नॉट राइट टू वर्क. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज DPSP अंडर आर्टिकल 41. येस, इट्स अ करेक्ट वन, रिलेटेड टू राइट टू वर्क इज करेक्ट. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the primary objective of the भाषणी प्लेटफॉर्म. भाषणी प्लेटफॉर्म का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, प्रमोट संस्कृत एज अ सोल ऑफिशियल लैंग्वेज. नो. curb cyber crimes through regional language awareness program. No. Provide biometric verification for Aadhaar service. No. It's enable automatic translation between Indian language using AI. Yes, option number D is the correct answer for this question related to the भाषणी प्लेटफॉर्म, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट करेगा इंडियन लैंग्वेज को यूज़ करके AI का. ओके, Next question is, consider the following statements
So there is asking about the correct statement. So first statement is the 100th Constitutional Amendment Act was passed to enforce the exchange of the territories between India and Myanmar. Is it true? No, it's not correct, because ये exchange of land जो हुआ था 100th Constitutional Amendment Act में, वो किसके साथ हुआ था? बांग्लादेश के साथ हुआ था. Okay, Bangladesh, not Myanmar. So first statement is incorrect. Next one is Indian territory can be ceded to a foreign state only by the amending the constitution under Article 368. Is it true? Yes, it's a correct one. So answer for this question is option number B. Only statement 2 is correct. Okay. Next one is which of the following commission or committee broadly accepted language as the basis of reorganization of a state, but it rejected the theory of one language, one state? It is done by the Fazal Ali Commission. Okay, in और ये हुआ क्यों था, इसके पीछे भी एक स्टोरी है. फॉर एग्जांपल इन 1953 हुआ क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्स करता है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, जो कि कौन सा था? सो आंध्र प्रदेश. ओके, आंध्रा, एंड सेपरेट किया था तेलुगु स्पीकिंग के लिए फ्रॉम द मद्रास स्टेट. ओके, एंड ये हुआ इसलिए था क्योंकि एक कांग्रेस पर्सन थे जो कि हंगर स्ट्राइक में चले गए थे. कितना? 56 डेज के लिए. ओके, 56 डेज के लिए, जिनका नाम था पोत्तु श्री रामुलु. ओके, क्या नाम था? पोत्तु श्री राम मुलु. ओके, मुलु. सो इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद ही एक्सेप्ट कर लिया गया था उसको, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को, जो कि चेयर कर रहे थे फजल अली. एंड बट वन लैंग्वेज वन स्टेट इसको रिजेक्ट कर दिया था. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and there is asking about the correct one. So first one is the in India a person is only the citizen of a country and not that of the particular state which he belongs to. Yes, it's a correct one. इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है, जिसमें कि आप किस स्टेट से हो उसका सिटीजनशिप लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ओनली इंडिया का सिंगल सिटीजनशिप होना चाहिए. ओके, सो ये सिंगल सिटीजनशिप का ये है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज नो फेडरल कंट्री अलाउज डबल सिटीजनशिप. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज अगर कोई फेडरल कंट्री अलाउ नहीं करता डबल सिटीजनशिप का, तो यूएसए में कैसा होता? सो यूएसए इज़ द एग्जांपल ऑफ फेडरल कंट्री अलाउिंग डबल सिटीजनशिप. यूएसए में क्या है, एक तो यूएसए का लेना पड़ेगा, और यूएसए में 50 प्रोविंसेस हैं, उसका सबका अलग से सिटीजनशिप लेना पड़ता है. सो यूएसए इज़ अ डबल सिटीजनशिप कंट्री. ओके, so answer for this question is option number C. Statement first is correct, but statement second is incorrect. Okay, next question is consider the following statements regarding the independence of the high court. Okay, independence of the high court के regarding कौन सा statement correct है वो पूछा गया है. So first statement is the judges are appointed by the president in consultation with the members of judiciary itself. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is the salary and pension of the high court judges are charged upon the consolidated fund of India. Is it true? No, it's not correct, because it's partially true, partially incorrect, because if we are talking about the salaries of the high court of the judges of the state, okay, हाई कोर्ट के जज की अगर सैलरी की बात करेंगे, इट्स कम्स अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है. बट अगर पेंशन की बात करेंगे तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज द रिटायर्ड permanent judge of a high court are prohibited from pleading or acting in any court or before any authority of India. Is it true? No, it's not correct, because ये
the retired permanent judge of a high court are prohibited from the pleading or acting in any court और but except इसमें किसमें except सुप्रीम कोर्ट में ये कर सकते हैं. सो सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following can injectable hydrogel be used? So there is asking about the correct one. So first statement is targeted and sustained drug delivery in cancer therapy. Correct one. Tissues engineering and regenerative medicine. Correct one. Enhancing soil moisture retention in arid agriculture region. It's also correct. So answer for this question is option number D. All three statements are correct. Okay. Next question is the Gulf of Elite share its coastline with which of the following countries? Egypt, Israel, Jordan and Saudi Arabia. ये चारों के साथ करता है. So answer for this question is option number option number D is the correct one. Okay, and let me show you where it is located on map. Okay, so here it is located. Okay, this is Israel, Jordan, Saudi Arabia and Egypt. और ये हो गया इलाइट. सो देयर इज लोकेटेड एंड ये हो गया गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी एंड गल्फ ऑफ सुएज कैनाल. ओके, एंड ये हमारा मैप में कहाँ पे लोकेट करता है? सो यू कैन सी इट हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to Constitution, 86th Constitution Amendment Act 2002, consider the following statement and there is asking about the correct one. So first statement is it provides for early childhood care and education to children below the age of 16. Is it true? Yes, it's a correct one. और ये कौन सा आर्टिकल में है? सो आर्टिकल 45 में, विच इज़ पार्ट ऑफ DPSP, जो कि DPSP पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इसमें आर्टिकल 36 to 51 तक आते हैं. ओके, एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बार बार रिपीटेशन क्यों हो रहा है आर्टिकल्स का एंड पार्ट्स का. तो जैसे कि आप लोग PYQs आप लोग सोल्व कर रहे होंगे तो उसमें डेफिनेटली आप देख रहे होंगे कि कैसे पार्ट्स भी मैच करने के लिए पूछे जाते हैं एंड आर्टिकल्स किस पार्ट में किस आर्टिकल से कितने तक आता है. ओके, सो इसीलिए इतना बार रिपीटेशन करती हूँ मैं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाएगा अच्छे से. ओके, बार बार रिपीटेशन होगा तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको याद होते जाएगा. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट it is the fundamental duty of every citizen to provide opportunity for education to his child between age of 3 and 14. Is it true? No, it's not correct, because जो एज रखा गया है फंडामेंटल ड्यूटी का वो रखा गया है एज 6 to 14, not 3 to 14. ओके, सो दिस वन इज़ इनकरेक्ट एंड ये भी इसी अमेंडमेंट से लाया गया था. एंड 40 जैसे कि एज वी नो फंडामेंटल ड्यूटी में क्या था कि फंडामेंटल ड्यूटी हमारा ओरिजिनली नहीं था. ओके, सो उसको 86th कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी नॉट 86th, इट्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो पार्ट 4A में ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 51A, जिसमें कि ओरिजिनली 10 आर्टिकल थे. बाद में एक और ऐड किया गया था जो ऐड किया गया था बाद में वो यही था. ओके, जिसमें एज रखा गया था कितना? 6 to 14, नॉट 3 to 14. So answer for this question is option number A. Only one is correct. Okay. Next question is Gati, Dakani and Dharamgarh. Gaddi, Dakani and Dharamgarh are related to which? What? Okay. So it's a indigenous pig breed suited to free range forest grazing. Is it true? No, it's not one. Native sheep breed adapted to different agroclimatic region. Yes, option number B is the correct one related to this one. Okay, next question is consider the following pairs. There is a moon mission. Okay, ये
and there is a country which is related to. Okay, so first one is Chang A8, which is related to China. Yes, it's a correct one, and it's not alone done by the China, it's a collaboration with Russia also. Okay, so first statement is correct. Next one is Slim related to South Korea? No, it's related to Japan. So second statement is incorrect. And if we're talking about the Slim, its full form is Smart Lander for Investigation Moon, and it's a फिफ्थ कंट्री जो कि जापान बना था कब 2024 में जनवरी में ये सक्सेसफुली लैंड किया था मून पे. ओके, एंड अनदर वन इज लूना 25 विच इज रिलेटेड टू रशिया. यस, इट्स अ करेक्ट. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लूना 25, it's not successful because it's crashed before लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया था ये. ओके, एंड ये अगस्त 25 में 2023 में लॉन्च हुआ था. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements. There is asking about the correct one. So first statement is the judge of subordinate court are appointed by the governor in consultation with the chief justice of a high court of the concerned state. Yes, it's a correct one. Next one is the sessions judge has the power to impose any sentence including life imprisonment and a capital punishment. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, both statement 1 and 2 is correct one. Okay, next question is consider the following statements, and there is also asking about the correct one. So first statement is first statement नहीं, इसमें question क्या है? So if a government of India wants to make amendment in the distribution of power between union and states, then first statement is amendment has to be made in the parliament under the article 368 of the constitution of India with a special majority. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one, ratification by one half of the state is necessary after the amendment made by the parliament. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, both statement is correct. एंड आप हमें कमेंट में ये बताइए कि जो अमेंडमेंट है वो कौन से पार्ट में रखा गया है. ओके, आर्टिकल 368 में जो है वो कौन से पार्ट में रखा गया. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements regarding the Cali Fund recently launched under the UN Convention on Biological Diversity. So there is asking about the correct statement. So first statement is it was officially launched during the resumed session COP16 held in Rome, which is in Italy. In Feb 2025. Yes, it's a correct one. Next one is it requires mandatory contributions from the all UN member states based on the GDP. Is it true? No, it's not correct because it's voluntarily, not mandatory. Okay, so next one is it focuses on revenue sharing from the use of digital sequences information DSI derived from the genetic resources. Yes, it's a correct one. So answer for this question is option number B, which is statement 1 and 3 only are correct. Okay. Next question is consider the following statement with respect to directive principle of state policy, which is DPSP, and fundamental duties. Okay, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड DPSP के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया. ओके, सो फर्स्ट वन इज प्रोविजंस रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट आर इंक्लूडेड इन बोथ इन द DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़. येस, इट्स अ करेक्ट वन. एंड अगर हम DPSP की बात करते हैं, इट कम्स अंडर द आर्टिकल 48A, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें ये आता है 51A सब क्लॉज जी में. ओके, सो नेक्स्ट वन इज हो जाएगा बोथ DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी यूज डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी
of law? Yes, it's also correct. Next one is both DPSP and fundamental duties have been amended multiple times. Is it true? No, because if we are talking about the DPSP, yes, it is amended multiple times. But if we are talking about the fundamental duty, it's amended only once, which is 86th Constitution Amendment Act. Okay, which is added 11th article of the fundamental duty. Okay, so answer is option number B, which is statement 1 and 2 only is correct. Okay, next question is, with reference to Indian citizenship, consider the following statements, and there is asking about the correct one. So first statement is, the children of foreign diplomats is posted in India cannot acquire Indian citizenship by birth. Is it true? Correct one. Next one is, originally the Citizenship Act 1955 provided for the concept of Commonwealth citizenship. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is, any citizen of India who has been ordinary resident outside India for 7 consecutive years shall lose his citizenship. Is it true? No, it's not any. मतलब सब इसमें नहीं हो सकता है. There is some exceptions. For example, is a student abroad. कोई स्टूडेंट है जो कि अब्रॉड में पढ़ रहा है और वो 7 कंजिक्यूटिव ईयर्स से वहाँ पर रह रहा है, सो इट्स नॉट अप्लाई ऑन दैट. एंड अनदर वन इज इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भी अप्लाई नहीं होगा. देन अनदर वन इज वर्किंग is in an international organization of which India is a member, उसमें भी अप्लाई नहीं होगा. अनदर वन इज हैज़ रजिस्टर्ड एनुअली एट एन इंडियन consulate to retain citizenship, उसमें भी अप्लाई नहीं होगा. So this statement is incorrect. So answer will be option number B. Only 2 statement is correct, which is statement 1 and 2 only. Okay. Next question is, consider the following statements related to preamble of the Indian Constitution. Okay. And there is asking about the correct one. So first statement is, it aspires to create equality of opportunity and outcome for Indian citizenship. Is it true? No, it's not a outcome of the Indian citizenship. Okay, citizen. So first statement is incorrect. Next one is, it empowers the parliament to legislate and to protect the promote fundamental right. It's also incorrect क्योंकि ये नहीं legislation, neither a source of power to the legislature or nor prohibition upon the power of legislature. Okay, so both statement is incorrect. And अगर हम preamble की बात करते हैं, so let me tell you the preamble, whole preamble. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens and justice. There is 3 types of justice, which is social, economic and political. And if you are talking about liberty is 5 types. So liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and equality of status and of the opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nations. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Okay, so this is whole Constitution. Okay, so answer will be option number D, which is neither 1 nor 2 is the correct one. Okay, let's come to the next question, which is, with reference to the provision of the Government of India Act 1935, consider the following statement. Okay, Government of India 1935 के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा गया है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, एज पर द एक्ट, bill passed by the central legislature would be subjected to veto by the
British Crown, yes, it's a correct one. Next one is it removed the distinction between transferred and reserved subject in the provinces, and whole administration was entrusted with the ministers responsible to the legislature. Is it true? No, it's not. Sorry, yes, it's also correct. Next one is it envisaged establishment of all India Federation excluding princely state. Is it true? No, it's not correct because प्रिंसली स्टेट को भी इंक्लूड किया गया था, ओके, न कि एक्सक्लूड. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A. Only 1 and 2 statement is correct. Okay. Next question is the term Jevons paradox recently seen in news. Okay. So Jevons paradox recently seen in news refers to which of the following phenomena? So first one is tendency of renewable energy source to become less efficient during peak demand of period. No. The unintended increase in overall resources consumption as a result of the improvement in efficiency. Yes, option number B is the correct related to this one. So next question is consider the following statements regarding the High Court, and there is asking about the correct statement. So first statement is the President can transfer a judge from one High Court to another after the consultation with the Chief Justice of India. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is the transfer of a judge of a High Court requires the concurrence of the collegium. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both statement 1 and 2 is correct. Next question is which of the following is a primary objective of the Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana? Okay, so first is promote rooftop solar irrigation system. No, it's not related to Dhan Dhanya because इसमें solar rooftop की बात करें तो खेत में तो लगाएंगे नहीं rooftop. Okay, so second first statement is incorrect. Next one, providing interest free loan to farmer procedure organization. No. Ensuring universal crop insurance under the PMFBY. No, it's also incorrect. Enhancing agricultural productivity in low yielding district. Yes, and option number D is the correct one. And इसमें 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया गया था फॉर एग्जाम्पल. और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? बजट 2025 एंड 26 में. ओके, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लाया गया था. एंड इसमें क्या था कि डेवलप किया जाएगा एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जिसमें स्कीम्स टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट विथ लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी एंड बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स. ओके, जिसमें कि इन्हांस किया जाएगा to enhance agricultural productivity, to adopt crop diversification and sustainable agricultural practice, and to augment post-harvest storage and panchayat and block level, and improve irrigation facilities and improve credit availability. Okay, so option number D is the correct one. Let's come to the next question, which is with reference to cyber crime, the term pig butchering is best described. Okay, so first one is a data breach technique used in cloud services. No. A method of laundering money using microtransaction. No. A transfer tactic that blocks access of a trading app. No. A scam where victims are induced to invest repeatedly based on fake profit. Yes, option number D is the correct one related to this question. Next question is consider the following statements. So there is asking about the correct one. So first statement is a private company is not open to writ mandamus in any case. Is it true? No, it's incorrect because in some cases private company also open a writ of mandamus, which is, for example, public duty. In a private company, public duty is cast upon such private body by the statute or statutory rule, then mandamus is applied on private company also. Okay,
So first statement is incorrect. Next one is the writ of habeas corpus is available to all to citizens in all cases. No, it's also incorrect because it's available in some cases, okay, not all in. So हमेशा आप ध्यान रखिएगा जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑल, एवरीवन या फिर एक्सटेंसिवली, ये सब में आप हमेशा फोकस कीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत होते हैं बट नॉट एवरी टाइम, ओके, ये भी ध्यान में रखना है. सो आप उसमें एक्स्ट्रा बट थोड़ा अटेंटिव होकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ओके, एंड उस स्टेटमेंट को देखिएगा, देन यू विल डू बेटर इन योर एग्जामिनेशन, ओके. So second statement is also incorrect. Next one is a writ of certiorari can be issued against both judicial and administrative body. Yes, it's a correct one. So answer for this question is option number B. Only two statement is correct, which is sorry, not B. It's only one, which is option number A. And कौन सा सही था? So statement 3 is also correct, only correct. Okay. Next question is who among the following are the two civil servants who are constitutional advisor and chief draftsman of the Constituent Assembly respectively. So it's done by the Sir B.N. Rao and Surendranath Mukherjee. So option number A is the correct answer for this question. Next question is with reference to overseas citizen of India, OCI card holder, consider the following statement, और there is asking about the not correct, okay. और ये भी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे not correct पूछा है या correct वन, okay. जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ये चेक करो कि वहाँ पे करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट, ओके, देन ऐसे में आपका मिस्टेक नहीं होगा. So first statement is overseas citizen of India card holder is not eligible for the appointment of a judge of the Supreme Court. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is OCI, which is overseas citizen of India card holder is entitled to be registered a voter in India. Is it true? No, it's not correct because वो इंडियन सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है और वो कौन से आर्टिकल में, अंडर आर्टिकल 326, ओके, जिसमें जो भी 18 ईयर्स से प्लस है उन्हें वोट का अधिकार है, वो कि इंडियन सिटीजन के लिए ओनली. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. और यहाँ पे क्या पूछा है? सो नॉट करेक्ट वन. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी बिकॉज स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट करेक्ट, ओके. और अगर हम नॉट करेक्ट नहीं देखे होते तो क्या मार देते? ऑप्शन ही है बिकॉज स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट था एंड स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट, बट यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following best describe the hyperloop system, okay. Hyperloop system regarding which statement is correct, okay. So first one is a high altitude supersonic jet route for the transnational cargo. Is it true? No. A mangrove based transportation system operating in low pressure vacuum tube. Yes, option number B is the correct one related to hyperloop system, okay. Next question is consider the following statements. There is asking about the correct one. So first statement is under article 34 of for the restriction on fundamental right while martial law is in force in any area within the territory of India. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is the constitution defines martial law as the suspension of ordinary law and the government by military tribunals. Is it true? No, it's not correct because there is no, कहीं पे भी मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं किया गया है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मार्शल लॉ इज बोरोवेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमन लॉ से ये बोरो किया गया, ओके. So second statement is incorrect. Next one is a declaration of martial law also results in suspension of habeas corpus. Is it true? No, it's not like that. कोई भी यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ तो ऐसा कोई नहीं है कि उसका रिजल्ट होगा कि सस्पेंड हो जाएगा habeas corpus जो. No, so it's also incorrect. So answer for this question is option number A. Only one statement is correct, okay. Next question is consider which of the following fundamental
fundamental right has the provision related to the wearing and carrying of kirpan as a part of Sikh religious in terms of Hindu would include Sikhs. Yes, it comes under the Article 25 of the Indian Constitution, because in the fundamental right, Article 25 to 28 is related to the रिलीजन, ओके, जिसमें आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो एंड प्रमोट भी कर सकते हो, बट किसी को उसके लिए आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपका रिलीजियस ये करे. सो इट्स कम्स अंडर द आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टेक्नोक्रेसी. एंड वर्ड देख के आपको क्या समझ आ रहा है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्नोक्रेसी, वही पूछा गया है. ओके, द टेक्नोक्रेसी मतलब आप जब यहाँ टेक्नो देख रहे थे, इट्स मीन्स कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा. ओके, सो देखते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो फर्स्ट वन इज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिलीजियस लीडर एक्टिंग इन द सेम गॉड रूल इन द स्टेट. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू द टेक्नोक्रेसी. ओके, उससे अगर कुछ होगा तो रिलीजियस लाइक थिंग कुछ हो सकता है, नॉट टेक्नोलॉजी से. नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ फ्यू एलाइट सिटीजन रूल. इज इट ट्रू? नो. Next one is it is a form of government in which expert in technology would be in control of decision making. Is it true? Yes. Option number C is the correct one, because it's talk about the technology would be control of the decision making. Okay, technology यहाँ पे control कर रहा है decision making में. So option C is the correct one. Next question is M Moore tunnel. Okay, sorry, Jedmore tunnel. Jedmore tunnel recently in news for enhancing all weather connectivity connects which of the following places. किस किस place को connect कर रहा है? So first one is Manali and Kelong. It's not connected through the Jedmore tunnel. It's connected to the Atal tunnel. Okay, Atal tunnel. So first statement is incorrect. Next one is Gagangir and Sunmarg. Yes, option number B is the correct one, related to the Jedmore tunnel. Okay, which is connects both Gagangir and Sunmarg. So option number B is the correct one. Next question is consider the following statement about the unwritten constitution or uncodified constitution. Okay, unwritten constitution and uncodified constitution. So there is asking about the correct one. So first statement is these can be adapted to changing situations without a formal amendment. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is their principle may be scattered across many sources. Yes, it's also correct. These certainly lack enforceable rights due to the absence of codification. No, it's not correct, because therefore absence of codification does not means the absence of enforceability. So third statement is incorrect. Next one is these rely on convention, customs and judicial decisions. Yes, option number 4 is statement 4 is correct. So answer for this question is option number C. Only 3 statement is correct. Okay, next question is consider the following statements regarding the procedure for the amendment to the constitution, and there is asking about the correct one related to the amendment. So first statement is the introduction of the constitution amendment bill does not require prior permission of the president. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is the constitution amendment bill cannot be discussed in joint sitting of two houses of the parliament for discussion. Yes, it's also correct. So answer for this question is the option number C. Both statement 1 and 2 is the correct one. Okay, next question is with reference to exercise cyclone. Okay, exercise cyclone के regarding कौन सा statement सही है, and there is asking about the correct one. Okay, so first statement is
It is a special force exercise conducted jointly by the India and Egypt. Yes, it's a correct one. Next one is exercise include high intensity combat, counter terrorism drill and tactic operation in desert terrain. Yes, it's also correct. और अगर ये डेजर्ट टेरेन में है तो ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान में, क्योंकि इंडिया का राजस्थान वाला है, राजस्थान का वेस्टर्न वाला पार्ट जो है वहाँ पे डेजर्ट है। ओके, सो वहाँ पे कहाँ पे ये किया गया है? सो इट्स कंडक्टेड इन 2025 edition which is exercise cyclone 3 एंड कंक्लूड किया गया था 10th to 23rd of Feb 2025 में। और ये पे कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? सो इट्स कंडक्टेड इन द महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज, महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे? सो राजस्थान में। ओके, so answer for this question is option number C. Both statement 1 and 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements. The words socialist and secular were added to the preamble in 1946. Is it true? Yes, it's a correct one through the constitution amendment. जी हाँ, as we know ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड किया गया था 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द preamble cannot be amended to affect the basic structure of the constitution. Is it true? Yes, it's also correct because जो preamble है वो amend हो सकता है। अभी तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है, वो भी 42nd वाला ओनली। ओके, एंड बट ये बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो अमेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसको बेसिक स्ट्रक्चर माना जाए और किसको नहीं। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया था? तो केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में आया था। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज बोथ स्टेटमेंट इज 1 and 2 आर करेक्ट and statement second is not the correct explanation of statement 1. statement second जो है वो explain नहीं कर रहा है statement 1 को। okay, so option number B is the correct one. Next question is consider the following statement with reference to article 16 of the Indian Constitution, and there is asking about the correct statement. So first statement is related to the article 16. It prohibits discrimination both by the state and private individual. Is it true? No, it's not correct because it prohibits discrimination only by the state, not private individual. Okay, so first statement is incorrect. And if we're talking about the article 16, provide for the equality of opportunity for all citizens in matter of employment or opportunity to any office under the state, and इसमें कोई discrimination नहीं किया जाएगा on the basis of religion, race, caste, sex or descent, place of birth or residence. Okay, so first statement is incorrect. Next one is only parliament can prescribe residence as a condition for employment or appointment in state or union territory. Is it true? Yes, it's a correct one. So answer for this question is option number B. Only statement second is correct. Okay, next question is the Sapru report of 1945 hold an important place in the constitutional history of India for shaping the key provision of the constitution because it emphasized the need for. So first statement is related to this one, and there is asking about the correct one. So first statement is inclusion of provision for the protection of minority right. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one, inclusion of non-justiciable directive principle of state policy. Yes, it's also correct. And non-justiciable means आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे
नहीं जा सकते हैं अगर डीपीएसपी का वायलेशन कोई करता है। बट वही फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो वो आप जस्टिसेबल इन नेचर है, जबकि अगर कोई फंडामेंटल का वायलेशन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ओके, और ये कौन सा आर्टिकल आता है, तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट अपील की, तो इट्स कम्स अंडर द 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो उसमें हो जाएगा आर्टिकल 226। ओके, so this one is correct one. Next one is inclusion of non-justiciable fundamental duty. Is it true? No, it's not correct, because ये later 42nd कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया था, जो कि ओरिजिनली नहीं था इन दी सप्रू रिपोर्ट 1945 में। सपोज सप्रू रिपोर्ट 1945 में आया था, एंड ये 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 is correct, not 3, 1. Okay, so answer for this question is option number C. So thank you so much guys. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.